All right, everybody, we are live, and let's start off with today's class. And just a quick thingy. If you guys have noticed, I just changed my background. So yeah, we should be changing stuff in lives. Remember, but chalo, back to where we left our yesterday course content, chapter number 3, and we are officially starting off with this concept related to RAM. So I just gave you guys a quick introduction yesterday about random access memory or RAM. RAM क्या होता है? Whenever you guys go purchase a new sort of laptop or get yourself a new computer, you always tell the person that I need a laptop or a computer with at least maybe like 8 GB RAM, 12 GB RAM. Nowadays, people are like 16 GB RAM, and if you're up for rendering and all that stuff, then it's like 32 GB RAM. Um, yeah, it's in all those devices which has a computer in it. Like, so even your phone, the phone you guys get has some sort of RAM. So abhi jo aap log ke like the RAMs, the phones which you have, maybe if you have like a Samsung device, uske andar maybe 4 GB RAM or 6 GB RAM. It's not acha. Coming to the point, a lot of people believe कि RAM जो है ना, and it's raining at the back, alhamdulillah, by the way. But a lot of people believe, just like Saifullah said, Sir, like, is it related to space? That's a very good question. Guys, मुझे ये बता दे क्या is my voice totally audible या आप लोगों को background से आवाज आ रही है? Perhaps let me just turn off, just close the window. Just a moment. Let me close the window. It's better कि window बंद हो because उस तरीके से फिर आप लोग को अच्छी समझ आएगी. So now, so this is the common misconception. A lot of people think जब हम कहते हैं कि I'm getting a 16 GB RAM laptop or maybe a laptop which has 8 GB RAM, this basically means that I have way more space. But in reality, RAM is not for space. Let me erase this. मैं शुरू से सारा कुछ explain कर देता हूँ. RAM is not basically for your space. Say RAM has a different purpose. अब if we let's say store all this data जो कि हम बोल रहे हैं कि it's for space, अगर ये हम RAM के अंदर store करें, then why do we get ourselves something like a hard disk or a SSD? So you might have heard when you get a PC, the person is like, okay, this laptop has a 512 GB hard disk, or maybe he's like, if you get that newer laptop, so you might be like, it has a 512 GB SSD. So what's the difference between hard disk SSDs and these RAMs? Like, this is something जो कि आप लोगों ने समझना है. RAM and hard disk, they both store data, but what type of data they store, that is different. So जो आपका सबसे पहली चीज जो आपने समझनी है ना, कि जो हम RAM बोलते हैं, RAM stores the data that is currently being processed or executed. So I will write it like RAM stores the data, and then I will explain it. RAM stores the data that is currently being executed or processed. अब what do I mean by this? अब देखो, Saifullah said that is RAM used for storing data? Well, to one point, yes, it does store data. What type of data it stores, that's a different story. Like, let's say you guys get a new PC, like, okay, Saifullah Atiq got himself a new PC, gaming PC. And now on that PC, he has several games. So he has Fortnite on it. He has maybe a Minecraft, and he has some other game, maybe what other game do you guys play? Maybe he has RDR2, Red Dead Redemption 2. So he has all these 3 games on his computer right now. All these games are stored somewhere, right? So this game files or these files, exactly, अब इनको space तो चाहिए होती है. Saifullah said that these games require space in devices. अब वो space जो इनको मिलती है, that is basically given by your hard disk. So these games are basically stored in your hard disk. जब हम बोलते हैं ना कि your laptop or your phone has 128 GB storage, 256 GB storage, we are referring to basically hard disk. But at the same time, we also say like this laptop has 256 GB SSD and has 16 GB RAM. Now let's say ये hard disk. This is your hard disk. HDD is the short form for hard disk drive. Okay. And now we have a RAM up here. This is some other memory place. अब RAM के अंदर क्या चीज होगी? RAM के अंदर we are going to be storing the data that is currently being executed or processed. अब what do I mean by this? अब let's say Saifullah is like, I want to play Minecraft. Like, let's say Saifullah wants to play Minecraft. अब Minecraft will be taken from hard disk and it will be brought into RAM.
So Minecraft की जितनी files होंगी, that will be in the RAM. Why? RAM के अंदर ना there is one खासियत. There is one important characteristic around RAM. RAM is very fast. It is very fast. It is very fast, but at the same time, it is also very expensive. So for that reason, हम computer में ये एक बात हमने कर दी, like if I want to buy, let's say 8 GB RAM latest, it might cost me like for laptop, it might be like 9,000 rupees. At the same time, I can get like 1,000 GB worth of hard disk for the same price, around the same price, maybe around 7 to 10,000. Okay. Now you just see, I'm getting like maybe more than 100 times more storage. Why? We have both of these things, but why is RAM so expensive? RAM is so expensive because there is a point behind that. RAM is very fast if compared to hard disk. So like if I want to remember, मैंने कल आप लोग को कंप्यूटर की बात बताई थी, like up here, that in a control unit, it's like, exactly, you need good RAMs for gaming, but why do we need that? Because good RAMs are faster. अब इसमें सीन ये होता है कि if I want to, let's say, play a game, so I have games up on my hard disk. सही है. So now this is maybe my CPU. अब like up here it's my CPU जो हमने कल discuss किया था इतने अच्छे से. अब if I get a control, there is my control unit which is basically my brain, and then I have like my ALU up here and stuff like that. So अब CU control unit is my brain, right? So उसको signal आ गया that let's say I want to play Minecraft. So if I want to play Minecraft, so if my CPU wants to get data from CPU to the hard disk, it will take a lot of time. Why? Because getting data from your hard disk is relatively very slow. So what computer programmers came up with was that they decided on introducing something known as RAM. RAM ki kya khasiyat hai? It is super fast. So if I, let's say, want to play Minecraft, this means I don't have to deal with Fortnite or maybe RDR2 at this moment, right? So I'm just going to be bringing out for a Minecraft, like I'm going to take Minecraft ki files yahan se, I'm going to bring that to my RAM. Now RAM also stores the gaming files, but RAM के अंदर Minecraft क्यों आ गए? Because the definition of RAM is that it stores the data that is currently being executed or processed. So if I'm playing Minecraft right now, this means I'm basically processing or executing the Minecraft gaming files. तो अब वो RAM में आ गए. And RAM को लाने का मकसद क्या है कि if I have a RAM which is relatively way more faster, so CPU के साथ it can have very fast connection. अब किस तरह की communication हो सकती है, क्या connection हो सकती है? We discussed yesterday कि control unit has one other thingy. It tells the other components in the computer what to do, and उसके लिए वो क्या करते हैं? There are signals being generated, right? So अब signal could be anything. Like if I press, if I'm playing Minecraft and I press the space bar, तो space bar तो जब press होगा, the control unit, the CPU is basically, yeah, it is very interesting, man. It's really interesting. माशाल्लाह. So अब देखो, जब आप space bar को press करते हो, जब आप space bar को Minecraft में press करते हो, the player basically jumps, right? The player jumps. But how does Minecraft get to know that I have to jump? It's not like the Minecraft gets to know कि यार space press हो गया. Like this is my keyboard, let's say. This is my keyboard and this is the space bar, right? This is space. So if I press the space bar, Minecraft को तो नहीं पता लगता. It's like the space bar goes to your brain, which is basically your CPU. So the command, when I press the space button, the command goes to my brain, which is out there, CPU जिसे मैं बोल रहा हूँ. And then, exactly, अब आप कोई भी बटन प्रेस करते हो, that information first goes to your CPU or the person जो कि हम डिस्कस करें कल से, the brain of your computer. So your brain of your computer up here, it's like CPU. CPU के अंदर control unit is like, okay, the person press space, we need to quickly tell Minecraft कि यार ऐसा ना हो कि the person presses space and घंटे बाद बंदा jump करे. We want it to be super fast, right? Like the moment I press space, the same moment I want कि the person jumps. But for this reason, I want to ensure that the communication between CPU and the game is very, very fast. But how will I make sure that the communication between Minecraft game and the CPU is very fast? Uske liye, what I did was I introduced a new type of memory place, which is known as RAM. RAM की full form क्या है? It is random access memory. So आपकी जो random access memory है, इसको बोलते हैं basically RAM. अब RAM क्या करते हैं? RAM has one खासियत. क्योंकि RAM is super fast. If I want to play Minecraft, I get Minecraft to RAM. When I have it in my RAM वाली folder, उसके बाद मेरे पास पता है plus point क्या हो गया? एक ही plus point है. Now, if I'm pressing the space button, the CPU can quickly send the message to the RAM and to the computer, basically to Minecraft, कि bro, the person wants the player to jump. Just like that, if I'm playing, let's say RDR2 में I want to do shooting.
But now I'm not playing Minecraft, right? I'm not playing Minecraft. So what I will do is, okay, once I'm done with Minecraft, मैं Minecraft को बंद कर दूं, so Minecraft is going to go away from the RAM. It's not going to stay there permanently. This is one other point about RAM, कि RAM के अंदर कोई चीज permanently नहीं store होती. The moment you turn off your computer, या you turn off that file, या फिर your processing or execution of the file ends. The moment that happens, आपके RAM empty हो जाती है. So now the RAM is again empty. Now if I want to, let's say, play RDR2, so the files of RDR2 are going to go back into RAM. So it's going to come up here. So RDR2 जो आपके आगे, that's now in the RAM, RDR2. Now I have RDR2 up here. एक second guys. Oh, battery, I don't know for what reason, बहुत speed से पीने लग गए. It's not charging, by the way. Let me just turn off a few apps. I forgot charging my laptop, my bad. So back to where we were. So if I want to now play RDR2, so now Minecraft files are no longer up there. So Minecraft band ho gaye. So now in my RAM, I only have RDR2 key files. Now if I want to press the shooting button, if I want to shoot someone in the game, and in the game, again in the game. So exactly when I want to give information to the player, ki yaar, let me ride the horse, या let me do hunting. So जब मैं weapon लेकर किसी के ऊपर fire करूंगा game के अंदर, so what's going to happen? How will the game get to know that I pressed the mouse button? So it's basically like if I press the button up here on my keyboard or on my mouse, just like Saifullah said, that like when we are playing football games like FIFA, we press the buttons on the keyboard and it gives the information to players to kick or shoot the ball. Yes, exactly. अब यहाँ पे वो basically we press the buttons up here on the devices, and what's going to happen? वो signal जाते हैं, यहाँ से signal है. There is a signal. That signal goes from your device to the CPU. Now CPU has different type of thing. It has your brain, which is known as control unit. It has other thingies like ALU. Today we are going to be discussing other such things too. तो वो चीजें इनको process करते हैं. And when they're processing it, if I press let's say button M, and M is like maybe for riding the horse if I'm playing RDR2, so the computer will be like, okay, this person pressed M. He pressed M. Now what's going to happen? He is going to be sending a signal all the way from your control unit to the RAM. अब वो RAM के अंदर सिग्नल जाएगा, गेम के फाइल को पता लग जाएगा कि okay, he wants to press M. As per the code, when you press M, this means that the person wants to ride the horse. And इस तरह आपके signals quickly जाते हैं from the CPU to RAM. But अगर RAM exist ही ना करती, if let's say RAM was not there, अगर RAM में बोलूं कि RAM exist ही नहीं करती, let's say I cross this whole thing, the whole discussion, we don't have any sort of RAM. What's the problem going to be? The problem is it's going to take a lot of time for the CPU to communicate with your hard disk. So if I press M right now, just a moment, Saifullah, if I press M right now, maybe after 5 seconds, the game gets to know कि यार the person pressed M. And so मसला क्या होगा? It won't be smooth. आपके गेम स्मूथली नहीं रन करेगी, आपके गेम में लैग आएगा, देयर विल बी डिलेज, लेटेंसी इशू. सो वी डोंट वांट दैट, राइट? वी वांट आवर गेमिंग एक्सपीरियंस टू बी स्मूथ. सो उसके लिए we get ourselves RAM. And इसीलिए all those people who want to play games, they usually go with computers which have more RAM. So the more RAM you get, the more space, more games you can store. Like you might be able to store RDR2, and at the same time you can also maybe run Google Chrome. So Google या आप कोई भी application open करते हैं, that's going to go into the RAM. As long as it's running, it's going to store, it's going to be at the RAM. And let's say आपकी RAM full हो जाती है and you still want to run Fortnite at the same time. So I already have Google and RDR2 running, and all the 8 on 8 GB has finished. And now I also want to run Fortnite. What's going to happen? I won't be having any storage. And जब मेरे पास space ही नहीं होगी, the computer is going to lag, it's going to get hang, and then at the moment the computer will not work. It's going to get not responded. Exactly, Saifullah. इसी तरह. So yes, Saifullah, do you have any sort of questions? Yeah, anybody else? ये आप लोग को समझ आई है जो मैंने आप लोग को कहानी बताई है कि why do we basically have a RAM rather than hard disk, which was also there to store the data. So why did we introduce the purpose of having RAMs in our computer? So is this clear or not? Quickly, guys, in the chat box. This topic is a bit long, so we need to
मेक श्योर कि आप लोग को चीजें अच्छी से समझ आए. सो इफ इट्स नॉट क्लियर मुझे फिर से बता दो. नो नीड टू वरी मैम. Just let me know. Is it clear or not? Saifullah 1, Saifullah 2, Manal, everybody, quickly. Good, 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 good. It's clear. Clear. Good. चलो Saifullah, Sayyid Saifullah, can you also please let me know आपको समझ आई है या नहीं आई? If not, मैं आपको quickly overview दे. Okay, maybe his internet got disconnected. He left the meeting. But चलो, back to where we were. अब now we have discussed RAM की लॉजिक. अब रैम के आपने एक दो बात याद रखनी है. एक तो आपको ये पता होना चाहिए. लेट मी जस्ट रिमूव दीज टू लाइंस. परहैप्स आप लोग को, बल्कि दिस शुड स्टे देयर, इट शुड स्टे देयर. आप लोग बाद में अगर नोट्स देख रहे हो तो यू शुड गेट एन आइडिया. नाउ वी नीड टू नो फर्स्टली कि अगर रैम का आपसे पूछा जाए पर्पस ऑफ रैम, सो रैम स्टोर्स द डेटा दैट इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड और प्रोसेस्ड. दिस विल बी लेटर ऑन, वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग रैम वंस अगेन इन द सेम टॉपिक टुवर्ड्स द एंड. बट नाउ इन दिस प्रोसेस आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन आई एम doing some sort of instruction, like ऊपर हमने instruction discuss की है ना, all these instructions. So if I want to be like, if I open a calculator and I'm like 2 plus 2, if I'm like what? 2 plus 2. So 2 plus 2, guys, I guess I need to set up the charger because I guess it's lagging. Just a moment, give me a minute, guys. Give me a minute. Just a minute. Yeah, so just a moment. Let me set the laptop up here. And यहाँ से ना, let's continue the whole class. Is my audio clear or not? मुझे ये बता दे कोई. Clear. Okay, good, good. It's charging now. Chalo, back to where we were. Now, क्योंकि the laptop is a bit far away, I need to wear my glasses. So, I know it just not started right now. It started relatively 20 minutes ago, but we just had a quick discussion on basically RAMs and RAM की क्या logic होती है. Let me quickly give you an overview. फिर उसके बाद let's continue. So, एक second. Why is it laggy, man? I don't know. Turn off the full power. So yeah, back to it here, and now it's way faster. So this means कि मसला सारा low power mode का. So basically, Rayan, we just had a quick discussion कि we have RAM and then we have hard disk. The purpose of hard disk is कि it stores the data. But then why do we have basically RAM? RAM is there for a reason. RAM is very, very fast. So if I want to run something and I want to execute something, तो उस case में I will choose RAM. अब मतलब मैंने अब let's say I want to play Minecraft, so I'm going to bring Minecraft from my hard disk onto the RAM. Why? Because RAM is faster. So if I want to, let's say, if I press space button on my keyboard, to the computer, the game won't get to know that I'm pressing space, right? The CPU is gonna get to know that I just pressed that space button. So if RAM is faster, the connection between RAM and CPU is faster. So the CPU can quickly send a signal from the CPU to the RAM, telling the game कि यार the player wants to ask the player to jump. तो फिर वो जंप कर लेते हैं. If it was let's say hard disk, तो hard disk की सूरत में मसला ये होगा आपके पास क्योंकि the connection between CPU and hard disk is very slow. It takes a lot of time to send and receive data from hard disk to a CPU. So if I want to send some sort of signal कि jump या something, so the problem is going to occur in a manner कि आपका सबसे बड़ा issue ये होगा कि if I press that space button, maybe 5 seconds के बाद the player jumps. So I don't want this sort of latency issue or lags and stuff like that. For this very reason, is my mic on or not? Okay, it's on. So for this reason, we basically have this concept of RAMs. So हम RAMs जितनी ज़्यादा करेंगे इतने आपके कंप्यूटर ज़्यादा data store कर सकती है. And the definition and the purpose of RAM is that basically it stores the data that is currently being executed or processed. Apart from that, you need to understand that RAM has one extra. Exactly, it's super fast. इसीलिए तो इसको हम CPU के साथ connect करते हैं. It's super fast. Apart from that, RAM is volatile. What do I mean by volatile?
Volatile is the exact word जो आपने एग्जाम के अंदर यूज करना है. एक सेकेंड, किधर गए चार्जिंग सेटिंग्स, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. या एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. It literally just swept off all the battery for some reason. I don't know why. लेकिन जो भी हुआ है, let's start off. अब देखो आपके RAM के अंदर ना एक और बात है. RAM is volatile. When I say volatile, what do I mean by volatile? And now, oh my bad. Just a moment. This app is crashing. Let me just turn it off. Sorry for the inconvenience, guys. I better charge my laptop next time. So yep, back to where we were. Let me see, is it working now? Batteries. Can you guys see the screen? अभी आ जाएगी. हाँ, अभी आनी चाहिए. Can you guys see it? Good. Acha. So I was talking about how RAM is volatile. What do I mean by volatile? Let me erase it. यार एक तो ये laptop is below my head and now I cannot even have a good look at it. But RAM is volatile. When I say volatile, let me get the tablet in my up here. So RAM is volatile. I need to have a look at this because it shouldn't lag, to be honest. The laptop should be working fine. I don't know what happens to it. Sometimes when I run this app, इसको कुछ हो जाता है. I need to have a software update for the app. अच्छा हाँ, so I'm discussing volatility. Volatile का मतलब ये होता है कि अब आप ऊपर वाले example में देखो. I said that if I'm, let's say, playing RDR2 right now, and I'm like, RDR2 मैंने खेल लिए, I am done. Now I want to play Minecraft. So what did I tell you guys? I told you कि the moment I turn off playing RDR2, हमारे game RAM में से RDR2 हट जाएगी, right? Google, if I turn off Google Chrome is gonna get away, and my RAM is again gonna be empty. यार ये बस देखो ये मसले होते हैं. I don't know, man. I got like a latest MacBook and I don't know why it's lagging for some issue. I don't know why, but still, I need to sort this out. There is some bug with this software because whenever I run this, it tries to get that battery relatively very faster. So, इसका हम कोई solution निकालते हैं, don't worry. But I was talking about volatility. So volatility refers to the fact that when I turn off my computer, everything that is there in the RAM, it gets vanished. So आप लोग मुझे ये बताओ, अगर आप में से कोई Fortnite अभी खेल रहे हो अपने कंप्यूटर के ऊपर, you guys are playing Fortnite, and then suddenly the light goes out, तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है. The moment you turn on the computer again, क्या आपकी गेम उधर से ही कंटिन्यू होती है या फिर स्टार्ट से लग जाती है? It's from the start, right? कभी भी उसी पॉइंट से तो नहीं होती ना कि मतलब आपकी गेम बंद हो गई तो until or unless आपने सेव ना किया हो, so you're gonna lose everything. Why? Because all of that data was in the RAM, and when you turn off your computer, everything in the RAM just goes away. या फिर आप सेव कर लेते हो, और सेव जब आप करते हो तो उस सूरत में क्या होता है, उस केस में आपके हार्ड डिस्क के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है. तो आपके हार्ड डिस्क के अंदर चीजें आ जाती है व्हेन यू सेव द फाइल. बट इफ यू डोंट सेव अ फाइल एंड द गेम इज विद इन द रैम कैटेगरी, तो आपकी रैम इज नॉट सेव. रैम इज नॉट सेव. वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि इफ यू, लेट्स से रैम के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि अब लेट्स से मैं कंप्यूटर बंद कर लेता हूं, अगर मैं कंप्यूटर बंद कर लूं तो आपकी जितनी चीजें जो अभी चल रही है ना वो सारा का सारा उड़ जाएगा. इट्स जस्ट गोना गो अवे. व्हाई विल इट गो अवे? दैट्स द क्वेश्चन. सही है. अब वो इस वजह से कि जो आपके रैम होते हैं ना, रैम आपकी चीजें सेव नहीं करता. रिमेंबर, रैम के अंदर चीजें एंटर होती है इस तरह, रैम एंटर होती है एंड देन द डेटा गोज अवे. So it's not like a RAM is some sort of place जहाँ पे आप चीजें स्टोर कर सके. If you want to store data permanently, वो आप करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर. But if I want it for temporary purposes, like if I want to play Minecraft, obviously that is temporary, right? मतलब मैं हर वक्त Minecraft तो नहीं खेलूंगा. Maybe I want to play
RDR2 या maybe I want to watch a movie या maybe I want to just browse YouTube or Facebook, तो I will be opening other apps too. तो जब मैं चीज़ों को मुख्तलिफ तरीकों से करूँगा ना, तो इसका मतलब है I will be executing and processing stuff relatively बार-बार अलग-अलग चीज़ों को, तो उस केस में I will be using RAM. So the stuff which I'm currently executing, whether that's Instagram, whether that's something, oh, we also have Ahmed in the class, good. Exactly. So RAM's temporary storage facility when data is exactly बिल्कुल. So RAM के अंदर हम वो चीज स्टोर करेंगे जो कि currently execute होगी. So if it's RDR2, तो RDR2 आपके RAM के अंदर इधर आ जाएंगे. So it's going to run RDR2. The moment I'm done playing RDR2, if I want to open up Google and I turn off and I quit the game, RAM के अंदर से आपके RDR2 चले जाएंगे. फिर आप उसके अंदर जो नेक्स्ट चीज हमने एग्जीक्यूट करनी है, whether that's even if I'm like I want to do 2+2, so 2+2 के लिए भी जो रेलिवेंट आपके कोड्स, हार्ड डिस्क जो होता है ना, हार्ड डिस्क डज नॉट गिव अस इंफॉर्मेशन एज इन जो रैम जो है ना, रैम इंक्लूड्स द डेटा. देखो आप लोग को मैं एक क्विक मैप बता देता हूँ. आपका जो जितना डेटा होता है ना, ऑल द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन योर हार्ड डिस्क. सो इफ आई मेक अप अ हार्ड डिस्क राइट नाउ, दिस इज अ हार्ड डिस्क. सही है, this is your hard disk. This hard disk stores all your data. So all your games, all these web browsers, videos, movies, everything are there in your hard disk. So आपके hard disk के अंदर तो चीजें सारी stored है. अब hard disk के अंदर जब आपकी चीजें सारी stored है, इसके बाद important बात आता है. वो क्या कि अब let's say I want to play a game. I want to play game 1. This is game 1. Okay. I want to play a game. अब game 1 when I want to play, I want to make sure कि यार when I'm pressing the buttons on my keyboard, CPU should quickly be able to communicate with the game and do the intended option या जो भी intended चीज मैं करना चाहता हूँ. उसके लिए the computer programmers decided कि यार why not we create a new type of memory place जहाँ पे सिर्फ we are going to be storing the thing जिसको मैंने अभी execute करना है. So if this is RAM. Okay, this is RAM जो मैं अभी execute करना चाह रहा हूँ या whatever I want to use right now, उसको मैं RAM में दे रहा हूँ. So if I want to play game number 1, I bring game number 1 into my RAM. So I got the game number 1 in my RAM. Now I will be playing game and यहाँ पे let's say I have CPU. अब मैंने आप लोग को सबसे पहले क्या बताया था? I told you guys that RAM is very fast. RAM is very fast. So if I want to communicate between CPU and RAM, इसके ऊपर बहुत ही कम टाइम लगेगा. It's relatively going to take maybe millisecond, but at the same time, if I want CPU and hard disk to communicate, उसके ऊपर काफी टाइम लग सकता है. So the same command, if I'm like, if I say कि click करो मैं mouse के ऊपर, if I'm like clicking this button right now, what's going to happen? It's going to shoot right in the game. But if the CPU has to contact the hard disk, it's going to take a lot of time. But at the same time, if it is only discussing it with the RAM, so RAM is very fast. तो आपके यहाँ से यहाँ तक जो डेटा है, दिस रूट जिसको हम बसेस बोलते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये मोटरवे है इन सिंपल वर्ड्स. तो आप स्पीड से चीजें यहाँ पे कर सकते हैं. रैम डेटा स्टोर नहीं करती. तो द मोमेंट आई एम डन प्लेइंग द गेम, आपकी गेम रैम से हट जाएगी, इट्स गोना गो बैक टू योर हार्ड डिस्क. तो आपका डेटा फिर से रैम से हार्ड डिस्क के अंदर जाएगा. एंड जस्ट लाइक दैट हार्ड डिस्क से भी डेटा आएगा रैम के अंदर. सही है? यस, बिल्कुल. अब ये चीजें तो हमने डिस्कस कर ली है. बट अब हम पढ़ेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री. हैव यू गाइस एवर वंडर्ड how computers used to be back in like 1900s, जब नए नए कंप्यूटर आए थे 1900s में? What type of computers did we have? उनमें क्या क्या चीजें थी? I'm using a tab at a time. अच्छा, देखो इसमें अब एक चीज है. अब जो आप गूगल के ऊपर, रेहान just asked a good question. He's saying that if let's say I'm using a tab at a time, but then I open a new tab, so the one I'm using is in RAM and the other is in a hard disk. But Rehan, tell me one thing. You're opening all these tabs on a browser, right? So like I'm saying that maybe if you have 10 browser tabs up here, this is tab number 1, this is tab number 2. All of these tabs are open on what? They are opened on a single browser. Let's say that can be Chrome. So if you guys, exactly browser, now that's Chrome. Let's say for instance, अब आप ये सारा कुछ open करें Google Chrome के ऊपर. एक second. So yeah, I have all of this being opened at Google Chrome. Now the thing is कि Chrome तो एक ही ऐप है, right? So आपके RAM के अंदर currently Chrome आ गया. RAM के अंदर currently Chrome आ गया. So whatever tabs you open, they all are automatically under Chrome. तो जब तक Chrome open होगा, if you open like hundreds of tabs, आपका
वो RAM के अंदर रहेगा. This is the very exact reason कि if you guys open like multiple tabs at once, if you open like 10-15 tabs, the computer becomes slow. Why does it become slow? The reason is जब आप multiple, exactly, why does it stuck? The reason is जब आप multiple tabs खोलते हैं ना, तो every tab takes some sort of RAM. नहीं, it's not storage. इसकी बात ये कि if I say कि आपके कंप्यूटर के अंदर 8 GB RAM है, 8 GB RAM है, and आप 100 tabs खोल देते हैं, and let's say each of this tab is like taking maybe for instance 100 MB of RAM. तो आप ये सारे मल्टीपल खोलते जाएंगे 100 at the end आपके पास RAM ही नहीं होगी. And when you get when you guys have lower RAM on your computer, what's going to happen? आपका computer slow हो जाता है. And let's say if you run out of RAM, in that case your computer just crashes. So Emma just said, let me try to crash my computer. So what does he mean by crashing his computer? Crashing his computer basically means कि वो जो RAM वाली जगह है ना, RAM ही खत्म हो गई. It does not have any sort of RAM to include any new thing. Exactly. जब वो new tabs खोलते जाएगा, every new tab is going to occupy some sort of RAM. सही है? It's going to take some storage in the very fast hard disk, which is basically RAM. अब RAM में तो वो जगह लेता जाएगा. But जब वो multiple ले लेगा, तो there will be a point when his computer will not be able to accommodate any new tab. क्यों? RAM में जगह ही नहीं होगी. जब RAM में जगह ही नहीं होगी, तो वो कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा. Perfect. अच्छा, एक चीज मैं मिस कर गया. RAM को ना एक और वर्ड भी बोलते हैं. इसको आप लोग राइट डाउन कर लो. It is known as IAS. So this is also known as AKA, also known as. आप लोग Gen Z हो, so I don't think so I should explain what is AKA, but AKA basically means also known as. So AKA, RAM is also known as immediate access store. Let me write it with the text. यहाँ पे इसके साथ immediate access store, and it has a short form of IAS. So अगर आपके एग्जाम में ये लोग बोल दे what is IAS या what is one other name of RAM, so you should directly know कि when I'm talking about IAS is basically RAM. So RAM को इन्होंने basically immediate access store का क्या है? Even from the wording you should get to know immediate. कि मतलब if CPU wants to immediately quickly access something, तो वो जो जगह जहाँ पे ये quickly चीजें access की जा सकती है, that is basically your RAM. But RAM का अपना full name is random access memory. अच्छा, volatile part ये है कि let's say, अब देखो मैंने एक बात की है कि RAM के अंदर currently आपके Chrome on है, सही है? RAM के अंदर अभी Chrome ने जगह ली हुई है. अब let's say इस moment आपकी बिजली चली गई, सही है? आपकी बिजली चली गई. जब आपकी बिजली चलेगी and your PC turns off, आप उसके बाद जब PC को री ऑन करते हैं, तो क्या आपके वही क्रोम टैब्स ओपन होते हैं या फिर कंप्यूटर बिल्कुल स्टार्ट से ओपन होते हैं? मुझे ये बताओ. इट ओपन्स फ्रॉम स्टार्ट, राइट? एग्जैक्टली. व्हाई? क्योंकि आपके रैम के अंदर जो जो चीजें होती है ना, वो सारी रिमूव हो जाती है. एग्जैक्टली, स्टार्ट से होता है. जो कुछ आपके रैम में होता है, ऑल ऑफ दैट इज रिमूव. So ये जो the word volatile जो है ना, volatile basically in this case means, अगर मैं आप लोग को volatile की exact definition बताऊं ना, तो volatile basically refers to something that is easily evaporated. So if I'm like this solvent या this liquid is very volatile, तो this basically means कि यार ये चीज बहुत speed से evaporate हो जाती है. एग्जैक्टली. अब आपकी वो चीजें बहुत स्पीड से जब इवेपोरेट होती है, तो हमने वही सेम चीज रैम के साथ भी लगा दी है. हमने ये बोल दिया कि रैम इज वोलेटाइल, मतलब इट कैन नॉट स्टोर डेटा. सो इफ योर प्रोग्राम एंड्स, if you turn off the PC, or maybe if light goes off, or maybe अगर आप alt control delete दबा दें, so whatever was being opened on your specific game, अगर वो save नहीं किया, save अगर आप लोग करो तो save कहाँ पे होगा? It's gonna save in your hard disk. अगर आप लोग उसको hard disk में save नहीं करते, तो उस सूरत में जो भी आपकी चीजें हैं, they are just gonna get deleted. So when I say that RAM is volatile, इसका मतलब है volatile का. अच्छा, you want me to write it? Okay, let me write it. Let me write it up here. किधर लिखूं? यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी के सामने. So अगर मैं volatile का लिखूं, RAM does not store data, इस तरह लिख लेते हैं. And if anything is crashes या फिर it's removed, या फिर मैं बोल दूं it maybe gets closes without being saved. So without being saved, then the data is automatically
is automatically removed. In simple alfaz, if I explain it in one liner, तो RAM does not store data. सही है. अब ये चीज है आपके रैम एंड हार्ड डिस्क में. दिस इज द डिफरेंस. दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन योर रैम एंड हार्ड डिस्क. बिकॉज रैम के अंदर अगर आप गेम स्टोर कर ले, लाइक लेट्स से इफ आई इंस्टॉल GTA ऑन माय लैपटॉप राइट नाउ, इफ आई इंस्टॉल इट एंड फिर मैं लैपटॉप को बंद कर लूं या मे बी बिजली चली जाए, इवन व्हेन आई टर्न इट ऑन, मतलब माय विंडोज के ऊपर तो वहां पे गेम तो एग्जिस्ट करेगी ना, मतलब गेम की फाइल तो नहीं डिलीट होती, राइट? तो दिस मीन्स जो आपके रैम के जो, हाँ रैम इज टेम्पररी, बिल्कुल. आप जो कुछ रैम के अंदर डालते, दैट इज टेम्पररी स्टोर्ड इन रैम जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, फॉर एग्जीक्यूशन या प्रोसेसिंग. द मोमेंट आपकी प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड, रैम से हम चीजें हटा देते हैं. अगर आप लोग ने कभी कंप्यूटर के ऊपर टास्क मैनेजर खोला हो, टास्क मैनेजर, इफ यू गाइज आर ऑन लैपटॉप राइट नाउ, तो ऑन विंडोज लैपटॉप, तो आप लोग नीचे जाके अपने बार के ऊपर राइट क्लिक करें एंड वहां पे आएगा, हाँ अब दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. सही है. स्लीप मोड वाली चीज अलग है. अब स्लीप मोड में होता है कि आपकी चीजें बंद ही नहीं होती, सो द डेटा स्टोर्स इन द रैम अंटिल और अनलेस आप वो ऐप बंद करो. बट लेट्स से अभी आप टास्क मैनेजर खोलो, तो टास्क मैनेजर के ऊपर आपको वो सारी चीजें आ जाती है दैट आर करंटली बीइंग रन. तो उसमें आपको आगे एक चीज होगी कि हर ऐप कितनी रैम ले रही है. So this means all that data is currently being executed or processed. So maybe आपके लैपटॉप पे Fortnite गेम पड़ी हो, but if you're not running Fortnite, so it won't get into RAM. But let's say you played Fortnite, तो the moment when you were playing Fortnite, उस वक्त तो RAM में होगी. But just as you turn off the game, आप quit कर लो, तो आपका रैम एम्प्टी हो जाता है, फोर्टनाइट चली जाती है. इसीलिए जब आपके कंप्यूटर में रैम कम होती है, यू टर्न ऑफ स्टफ, यू मतलब हैव मतलब अब आपके 10 टैब्स थे, आपने 5 टैब्स खोल दिए रादर देन 10, तो आपका कंप्यूटर तेज हो गया. क्यों तेज हो गया? बिकॉज द मेन रीजन इज कि आपके पास रैम बढ़ गई. सो रैम बढ़ गई, सो यू कैन डू अदर स्टेप्स. तो रैम जब मैं बोलता हूँ वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल बेसिकली रेफर्स टू द फैक्ट कि इट डज नॉट स्टोर डेटा, इट इज टेम्पररी सॉर्ट ऑफ मेमोरी, जहां पे अगर कुछ क्रैश हो जाती है या कोई बंद हो जाता है, तो आपका जो डेटा उसके अंदर होता है वो सेव नहीं होता, that just goes away. सही है. Every device has a RAM. Every device, whether it's every device, I mean any device that has a computer in it. Okay, that has a computer in it. So your TV has RAM. If you have like a smart TV, जो latest Samsung के TVs आते हैं, Samsung के latest TVs जिनके अंदर वो Android operating system होता है, तो आपके ख्याल में से किस तरह आप उस पे YouTube खोलते हैं तो YouTube रन हो जाता है? Definitely वो YouTube आपके RAM के अंदर आ जाता है. Then that is being executed. iPad has RAM, iPhones have RAM. Your phones, anything that has a CPU, a computer in it, तो उसके अंदर भी RAM है. Exactly. अभी हाँ, your TV does have RAM. anything that includes, अब इसमें कोई चीजें ऐसे हैं, अब देखो ये माउस, I have a mouse, अब माउस के अंदर रैम नहीं है. why? Exactly. अब रैम आपके माउस में अंदर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि माउस ने एक ही काम करना है. दिस इज समथिंग नोन एज एम्बेडेड डिवाइस या इस तरह की चीजें, ये हम आगे पढ़ेंगे. बल्कि दिस इज नॉट एम्बेडेड डिवाइस, वो हम आगे पढ़ेंगे, आप लोग को अच्छे से समझ आएगा. हाँ अब देखो, अहमद जस्ट सेड a normal tab has 4 GB RAM but gaming tabs has above 10 GB RAM. why? बिकॉज आपके गेमिंग में हैवी गेम्स जब आप रन करते हैं तो उनके लिए आपको ज्यादा रैम रिक्वायर्ड होती है, उसमें ग्राफिक्स ज्यादा होते हैं, बड़ी फाइल्स होती हैं, तो उनको एक टाइम के अंदर व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट बिटवीन सीपीयू, लेट मी गेट द पेन, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट बिटवीन सीपीयू एंड द गेम फाइल्स, तो आपने इंश्योर करना है कि यार आपके पास इतनी जगह तो हो कि इफ आई वांट टू रन RDR2, तो RDR2 को रन करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, एग्जैक्टली रहे, तो आप उनको प्रोसेस करने के लिए वगैरह आपके पास इतनी जगह हो कि वो अच्छे से हो सके. सो दिस इज बेसिकली रैम का बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हमने पढ़ लिया, इवन दो इट वाज बेयरली ये जो हमने सारी डिस्कशन की है बुक के अंदर, दिस इज जस्ट वन पैराग्राफ एंड वी जस्ट लिटरली स्पेंट 35-40 मिनट्स. बट आई होप कि अब आप लोग को रैम का सारा कुछ बिल्कुल लैपटॉप एंड फोन्स पे लाइक एनीथिंग 4 GB 5 GB दैट्स इनफ. आप लोग को अभी रैम का सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि इफ आई एवर आस्क यू कि रैम के अंदर क्या होता है तो आप लोग को समझो, बस गुड हो गया. Now this is what makes our classes a bit different. We are trying to make sure कि आपको हर छोटी चीज अच्छे से समझ आए. अब ये अगर मैं कोई स्कूल में आप लोग ये पढ़ेंगे, अगर आप लोग कॉलेज में जाते हैं, तो you're gonna feel like कि ये बच्चे टीचर्स बहुत स्पीड से करा देते कि यार there is something known as RAM, उसके अंदर डेटा स्टोर होता है. अब now you should be very well aware कि why we have a RAM and hard disk at the same time. Yes, बस आखिरी 15 मिनट्स है, उसके बाद बिल्कुल स्कूल में बेयरली 5-10 मिनट्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इस तरह, एंड वो बस सर के ऊपर से गुजरता है. सो नाउ
वी आर डन विद रैम, सही है, हमने रैम का सब कुछ पढ़ लिया. बट नाउ वी नीड टू डिस्कस, एक तो पता नहीं ना मेरे आज ये लैपटॉप क्यों लैग कर रहा है. आई गेस आई हैव अ सॉफ्टवेयर अपडेट जिसको मैंने किया नहीं है, एंड नाउ द लैपटॉप वांट्स मी टू डू दैट, और अब वो मुझे तंग कर रहे हैं. बट नाउ वी नीड टू डिस्कस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. सो आप लोग के ख्याल में से देखिए, आज का जो कंप्यूटर है ना, माय लैपटॉप राइट नाउ दैट कैन डू मल्टीपल थिंग्स. Like if I connect my AirPods right now, I can listen to some audio. At the same time, I can make a presentation. At the same time, I can live stream. So I can do multiple things right now if I want, right? So these are the newer computers. ये देखो, Rayan just told us that the teacher just taught the whole concept for 5 minutes. अब यही तो मसला है. That is what I tried to explain at the very start. कि the teachers don't teach CS in the right way. सही है. Once you get the concept of, देखो अभी आपको रैम के समझ आ गया ना. Even if an examiner comes up with a very अजीब सा question and he's like, why do we have hard disk when RAM also does the same thing? तो आप लोग को पता होगा कि RAM is very very faster. When RAM is faster, it can relatively get data in a much faster way. So that's so good to know, Rayan, कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया. Now अब जो हमारे पुराने कंप्यूटर्स थे ना 1900s के जमाने में, जब नए नए कंप्यूटर्स आए थे, उनमें ना एक चीज होती थी, you cannot store data. You could not store data. So it was more of like, अगर आप लोग को, I don't know अगर आप लोगों ने ये देखा हो, but exactly बिल्कुल सैफुल्ला यही है. अब I don't know आप लोग को इसका पता है या नहीं, but back then when I was a kid, सही है, इतना बूढ़ा मैं नहीं हूँ, I'm just 18 by the way, but still back then when I was a small kiddo, there used to be this one device, उसके ऊपर मैं games खेलता था, and it was something like कि आप उसके अंदर कोई चीज इंसर्ट करते थे, like if I want to play Taken वाली game या something like Taken, तो मैं वो चिप होती थी उसके अंदर, उसके ऊपर पिक्चर बनी होती थी कि like this is Taken वाली game, okay? Back in my days, हाँ. So वो मैं उसके अंदर इंसर्ट करता था. It was a Nintendo Switch. Nintendo तो बहुत बेहतर है. It was some small gaming console type of thing. Nintendo is way better. No, it wasn't PSP either. It was something, वो कोई कंपनी का कोई बड़ी चीज नहीं थी, but it was something relatively small gaming console type of thing. आपने गेम लेनी थी and आप उसके अंदर इंसर्ट करते थे. आप वो चीज इंसर्ट करते थे and फिर वो गेम खेलने लग जाते थे. बस जो भी था आई डोंट रिमेम्बर, बट आप उस तरह की गेम खेलने लग जाते थे. सही है. अब उसमें क्या होता था, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नाउअडेज वाले लेटेस्ट प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स या निंटेंडोज? आजकल इफ आई वांट टू प्ले सम गेम, I can install the game on my console, right? So if I have an Xbox right now with me and I want to play Fortnite, तो मेरे Xbox के अंदर hard disk है, it has RAM in it. Nintendo के अंदर क्या है? Exactly, Nintendo is a gaming console. Of course, Nintendo also has RAM and a hard disk in it. So if you want to install something, can you install games on Nintendo? I guess you can. Yes, Saifullah. It's a gaming company. बिल्कुल बिल्कुल. Nintendo के ऊपर I guess you can install games. So देखो, if you can install games on Nintendo too, तो इसका क्या मतलब हुआ? It can store data. But वो जो मेरे वाला console था, उसमें एक चीज था, मैंने खुद भी इतना नहीं खेला, to be honest. I have an Xbox, so मैं तो Xbox का ही player हूँ, and I had a PS2 before that, so that was goated console, to be very honest. Yes, बिल्कुल. So अब ऐसा है कि जो नए कॉन्सोल्स हैं दे कैन स्टोर डेटा, बट जो आपके पुराने कॉन्सोल्स थे ना, उनमें डेटा नहीं स्टोर हो सकता था. अब लाइक उसका क्या मतलब है कि डेटा स्टोर नहीं हो सकता? इसका मतलब ये है कि इफ आई वांटेड टू डू 2+2 वाली कैलकुलेशन, तो देयर यूज्ड टू बी सेपरेट कार्ड्स. लाइक एक कार्ड में बना दूं, लेट्स से दिस इज अ पेन, राइट? दिस इज अ पेन. इफ यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन राइट नाउ, दिस इज अ पेन, दिस इज द ग्राफिक पेन, एंड देन ये लेट्स से माउस ले लेता हूं. So I used to make such cards. सही है. I used to be like, this is 2, this is plus, this is again 2. So if I wanted to perform any sort of calculations like 2+2 क्या होता है, तो I used to be like, कंप्यूटर के अंदर एक स्लॉट होती थी. Like अगर आप लोग को पता हो, हम लोग CDs, when we used to install games, हम बाहर से CDs लेते थे, उसके अंदर डालते थे, insert and फिर game. तो हमारा पहले इस तरह के कंप्यूटर्स चलते थे कि I used to like, this is computer, right? So I used to insert the card. तो ये 2 input हो गए, कंप्यूटर gets to know कि 2 आ गया. Then I'm like plus, so plus पे insert हो गया. Then I'm like 2 again put हो गया. So now the computer has 3 functions, 2+2, and उसके जो CPU है, उस जमाने का CPU, exactly उस जमाने का जो CPU है, उसको समझ आ जाती थी कि यार 2+2, okay, answer is 4. But the issue is
कि मैंने जो चीजें इंसर्ट की है इट डज नॉट गेट स्टोर्ड, राइट, इट डज नॉट गेट स्टोर्ड। तो जब आपकी चीजें स्टोर नहीं होती थी तो आपके जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे उसमें ये एक इशू था कि यू यूज टू इंसर्ट स्टफ, बट द मोमेंट यू आर डन विद इट आपने चीज निकाल देनी थी। यू कैन नॉट मेक श्योर कि यार चीज कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट करे। अब क्या हो गया, नाउ द लेटेस्ट कंप्यूटर्स can store it. Like I have installed Google Chrome, right? So I'm not inserting any sort of USB dongle or maybe some memory stick या maybe some CD onto my computer ताकि उसके अंदर Google Chrome चले। I have installed it, so it can store data. So क्या हुआ कि आपके जब 1940s आए ना, 1940s के अंदर CDs is a different story. CDs अभी भी होते हैं। I'm talking about these are basically cards. तो हमारे पुराने कंप्यूटर्स में इस तरह के कार्ड्स होते थे, सही है, एक कार्ड हो गया उसके ऊपर 2 है, सो दिस इज ओनली 2। तो आप जब ये इंसर्ट करते थे कंप्यूटर के अंदर तो कंप्यूटर को समझ आ गया, हाँ टाइप ऑफ मेमोरी कार्ड्स ऐसे समझ लो। अब अभी दिस इज जस्ट फॉर योर ओन नॉलेज, इट्स नॉट गोना बी टेस्टेड इन एग्जाम, बट आपको पता होना चाहिए कि पुराने कंप्यूटर्स में आप कार्ड इंसर्ट करते थे तो दैट यूज्ड टू वर्क। अब क्या हुआ 1940s में, अ पर्सन मे बी रेयान को गुस्सा आ गया कि यार ये मैं क्या यार हर चीज करने वाला होता हूँ तो मैंने कोई ना कोई कार्ड इंसर्ट करना होता है ना, हेट दिस, एंड ये क्या ड्रामा है यार, ये मैं हर वक्त यही चीजें करते जाऊंगा, ये तो बड़ा बोरिंग सीन है, मुझे अब इसमें कोई, आई नीड समथिंग बेटर, आई नीड अ शॉर्टकट। अब रियान इज लाइक लेट्स डू समथिंग न्यू। अब आई एम लाइक रियान क्या करोगे? रियान वाज लाइक आई शुड डू समथिंग इन अ वे कि यार द कंप्यूटर शुड स्टोर इट। So ये 1940s में देर यूज्ड टू बी दिस वन प्रोग्रामर जिसका नाम था टाइप ऑफ वॉन न्यूमैन। एक सेकंड, वॉन न्यूमैन, एक जस्ट मोमेंट, वॉन न्यूमैन। सो उस बंदे का नाम था किधर गई यार, ब्राइटनेस 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 40%। सो हमारे पास यार आप लोग सीडीज के ऊपर बात करने, डोंट वरी गाइस, इसी टॉपिक के अंदर वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन ऑन सीडीज इंशाल्लाह। तो उसमें हम सीडीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो 1940s के अंदर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया whose name was Von Neumann. या perhaps this is something long man, ये कल ना डिस्कस कर ले या मंडे को ही अब कर लेते हैं, because this is long, I don't want to leave it in the middle of discussion. But ये हाँ, ये उस दिन कल भी हमने रैम को थोड़ा सा वो कर लिया था, फिर उसमें यही था कि फिर मैंने आज भी रैम को शुरू से ही किया है, तो मंडे को भी आई नो कि मैंने स्टार्ट से ही करना है। सो वी जस्ट हैव 8 minutes लेफ्ट, सो वो भी कर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई माय लैपटॉप इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ मसले, आई नीड टू फिगर इट आउट कि इसको ये हो क्या गया है, मे बी इट नीड्स अ रीसेट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो मंडे को हम कर लेंगे कंटिन्यू। सो टिल नाउ, अब लेट मी एंड द रिकॉर्डिंग पहले, बल्कि रिकॉर्डिंग लेने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे ये बता दो कि मंडे को ना डिस्कस करो। हाँ मंडे को रैम नहीं होगी, डोंट वरी, रैम हो गया। रैम को हमने प्रॉपर 40-50 मिनट दे दिए। आप सब लोग मुझे ये बताएं, इज देयर एनीवन ऑफ यू हु विल बी गिविंग द एग्जाम इन अक्टूबर नवंबर 2025? यस और नो? कोई है यहाँ पे जिसने अक्टूबर नवंबर में एग्जाम देने? ओके, नॉट यू। ओके सैफुल्लाह, यू नीड टू गिव एग्जाम इन अक्टूबर नवंबर। मैसेज मी आफ्टर द क्लास, आई विल शेयर सम टिप्स, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के लिए आई शुड बी गिविंग यू, आप लोग ने अक्टूबर नवंबर में फिर अपीयरिंग, तो उसका सीन थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम द मे जून की डोज। ओके गुड गुड गुड, बाकी कोई नहीं है तो बस कोई मसले की बात नहीं है। सैफुल्लाह आपको मैं ना थोड़ी से बताऊंगा कि आपने टॉपिकल प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ताकि बाय द टाइम यू आर डन विद द कोर्स आपका इस तरह हो कि यू आर डन विद द होल पेपर्स। सो आप लोग मुझे एक और बात बता दें, एवरी वन ऑफ यू, अभी तक जितना हमने पढ़ा है, बल्कि लेट मी जस्ट एंड द रिकॉर्डिंग, मैनेज रिकॉर्डिंग एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग।